But our special focus this Wednesday night is on Pakistan and Peshawar. While in one part of Peshawar, the Pakistani Prime Minister vowed to crack down on terror, sitting side by side with Imran Khan, his sworn enemy, in another, caskets with bullet-ridden bodies of little children, perhaps the heaviest burden to carry for any parent, were buried. There was a prayer on every lip as the world mourned with Pakistan a day after the Peshawar attack. Here's a special report from Peshawar. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Shrouded in deathly silence, this is Peshawar's Army Public School a day after the attack. Inside the building, disturbing signs from one of Pakistan's worst terror attacks. Dark, unsettling, and frightful images from a day before. Classrooms riddled with bullets and floor splashed with blood. ये 10th जमात का अटेंडेंस रजिस्टर है आर्मी पब्लिक स्कूल का, जहां बच्चों ने पहले अपनी हाजिरी लगवाई, फिर इम्तिहान के लिए बैठे। इसी तरह ये उन मासूम बच्चों की किताबें जो शायद अब इसे हाथ ना लगा सके। A day after, Pakistan was a nation battling nerve-wracking fear and unspeakable anger. मैं वो बदकिस्मत रिपोर्टर हूँ जिन्होंने 100 से ज्यादा कल 106 डेड बॉडीज देखी हैं बच्चों की। रात गए तक मैं उन बच्चों को जो सुबह यूनिफॉर्म में माओ ने बहुत प्यार से तैयार करके भेजे थे, आज मैं आपको शायद मैं अपने जज्बात पर काबू ना पा सकूंगी। खुद मैं एक माँ हूँ। A funeral procession left from almost every second street in Peshawar. Mourners stretched as far as the eyes could see. Pakistan Prime Minister chaired an all-party meet and vowed a fight back. His army chief air dashed to Afghanistan to seek extradition of Taliban leader Mullah Fazlullah. हम इस बात का भी वाज़े ऐलान करते हैं कि अच्छे और बुरे तालिबान की कोई तमीज़ किसी सतह पर रवा नहीं रखी जाएगी। इस जंग को उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक हमारी सरजमीन पर एक भी दहशतगर्द बाकी है। The morning after had revealed every horrific detail of the dastardly attack. ये वो मकाम है उस आर्मी पब्लिक स्कूल की बैक दीवार जिसके जरिए ये 7 के 7 दहशतगर्द असला और बारूद समेत इधर दाखिल हुए। If you see just behind you is the boundary wall. This is the rear boundary wall of the school. This is from where 7 terrorists entered yesterday in the morning using a stair, and then they came in the auditorium which is just behind me here. The small coffins of young students were the heaviest burden on terror-scarred Peshawar's shoulders. A grief that can't be assuaged by any amount of condemnation. Headlines today in sympathy with the people of Pakistan. An emotional father of a young student who was gunned down by the Taliban terrorists said, "I sent my son to school in a uniform. He came back in a casket." That perhaps sums up how most of these families on your screens felt today while they were burying their children, their future. While mass funerals and prayer vigils for the victims took place today, condolences have poured in from across the world. But it's the message from the young scarred survivors of the Peshawar attack that is in a sense defining the image and defines how people are now reacting to the cowards of the Taliban. दहशत अंकल हमें क्यों मारा जा रहा है? हम तो एक फूल हैं, हमें ना तोड़े, हमसे प्यार करें। हम फूल हैं, हम कलियां हैं, हमको पढ़ने दो।
हम शम्मा जलाए क्योंकि वो शहीद हुआ है। उनके मामा को दुख नहीं है क्योंकि वो शहीद हुआ है। हमारे हौसले बुलंद हैं। जी, दहशतगर्दों का मकसद ये है कि वो हमें तालीम से रोकें, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते क्योंकि हम उनसे नहीं डरते, हम उनसे खौफज़दा नहीं हैं। ये नफ़रत बुरी है, ना पालो इसे, दिलों में ख़ारिश है, निकालो इसे, न तेरा न मेरा न इसका न उसका, ये सब का वतन है, बचा लो इसे। Those are voices of young children there in Peshawar. Now the Peshawar Army Public School today resembles a graveyard. Torn notebooks, pools of blood and the dark memories of Taliban brutality is all that's left of it. Bloodstains cover the walls of the auditorium that was the epicenter of the massacre. Here's an Express News report of how a school of learning turned into a house of terror. ये है वो ऑडिटोरियम जिसकी एंट्रेंस के अंदर मौजूद है। कल यहाँ पेपर हो रहा था नहब और दहम क्लास का, जहाँ 7 दहशतगर्द दाखिल हुए। सबसे बड़ा टारगेट ये था कि कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान करे, और इस ऑडिटोरियम के अंदर पेपर थे। ये सिटिंग अरेंजमेंट से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वाकई सैकड़ों की तादाद में यहाँ बच्चे मौजूद थे जो पेपर दे रहे थे। खून की बू हमक इधर देखी जा सकती है, और साथ साथ वो डाइस और वो ऑडिटोरियम का वो मकाम जहां फायरिंग की गई है। ये फायरिंग के निशानात से आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह बेईमाना तरीके से और किस तरह कोई अल्फाज नहीं, किस तरह दरिंदगी का मुजाहरा किया गया यहाँ दहशतगर्दों की जानिब से। और उन नहते मासूम बच्चे जिनका कोई कसूर भी नहीं था, जो पाकिस्तान का फ्यूचर थे, उन्हें निशाना बनाने की एक कोशिश की गई, और बहुत हद तक दहशतगर्द अपने गंदे नापाक अज़ाइम में कल कामयाब भी रहे। इस पूरे हॉल के अंदर जगह जगह खून की बू है जो बता रही है कि यहाँ ये मासूम बच्चे शहीद किए गए। ये वो दीवारें जहाँ गोलियों के निशानात हैं, ये वो दीवारें जहाँ किसी ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि यहाँ कभी गोलियां बरसाई जाएंगी। यहाँ बच्चे किताबें और कलम थे कि ताकि पढ़ सके और पाकिस्तान के मुस्तकबिल में अपना किरदार शामिल कर सके। मेरे पास तो शायद अल्फाज भी नहीं बन पा रहे कि ये लेकिन इन बच्चों का खून रहेगा, कभी भी नहीं जाएगा। इन बच्चों के खून का हिसाब इन दहशतगर्दों को देना होगा। ये 9th जमात के बच्चों की किताबें हैं जो यहाँ पढ़ने के लिए आए थे। ये उनका अटेंडेंस रजिस्टर है, जिसके बाद उन्होंने अटेंडेंस लगवाई और पेपर के अंदर शरीक होने की अपने आप शामिल किया। ये 10th जमात का अटेंडेंस रजिस्टर है आर्मी पब्लिक स्कूल का, जहाँ बच्चों ने पहले अपनी हाजिरी लगवाई, फिर इम्तिहान के लिए बैठे। इसी तरह ये उन मासूम बच्चों की किताबें जो शायद अब इसे हाथ ना लगा सके क्योंकि उनके मुस्तकबिल से कोई जानवर खेल गया। जी हाँ, बल्कि जानवर से भी बदतर नाम दिया जाए उन दहशतगर्दों का जिन्होंने ऐसे लोगों को निशाना बनाया जिनका कसूर ही कोई नहीं था। कसूर भी कैसा हो, क्योंकि उन जानवरों को यह भी नहीं पता था कि हम मार किसे रहे हैं। मासूम बच्चे, सिर्फ 9 से 14 साल की उम्र के बच्चे। देखिए किस तरह खून बिखरा है। काश ये हमारी आंखें ये सब ना काश हमारी आंखें ये सब ना देखती, लेकिन आज हमारी आंखें ये सब देख रही है। काश ये ख्वाब होता, लेकिन क्या करें, 132 खानदान उजड़ गए, 132 मुस्तकबिल इस पाकिस्तान के उजड़ गए। लेकिन अब देखना यह है कि ये बाकी मराहिल किस तरह पूरे होंगे, उन खानदानों को हौसला कैसे मिलेगा। लेकिन यह ऑडिटोरियम का एक एक चप्पा, एक एक कोना एक अपनी तारीख बयान कर रहा है। ये उनके जूते इस वक्त भी इधर बिखरे पड़े हैं, ये उनकी किताबें इस वक्त भी उनकी बिखरी पड़ी हैं। जी हाँ, इस कॉपी के आखिर में दी एंड लिखा है। क्या वाकई इस बच्चे को अंदाजा था कि ये उसकी जिंदगी का दी एंड होने वाला है? क्या अब उसकी किताबों को देखकर उसके माँ बाप रोएंगे? शायद यही इस बच्चे का नसीब लिखा है। मोहम्मद आसिम, 8th क्लास, सेक्शन C, इंग्लिश लिटरेचर की बुक जो खूब आई गई। क्या इस बच्चे ने कभी, इसके खानदान ने कभी, क्या इस पाकिस्तान के मुस्तकबिल ने कभी ये तसव्वुर किया था कि वो ऐसी रोशनाई इस्तेमाल करेगा? That was from inside the auditorium where the terrorists struck.
Now, Pakistan is still struggling to come to terms with the death of 132 of its children due to terror. The tragedy has taken a toll not just on the families of these innocent children, but on the media as well. Many of the reporters who were covering the story broke down while reporting on the ghastly Peshawar attack. Take a look at this emotional report by a Geo TV correspondent. उन माओं से कौन कहेगा कि मामा हमने स्कूल जाना नहीं है, हम स्कूल कल चले जाएंगे, आज छुट्टी करें। अब वो कभी स्कूल नहीं जाएंगे राबिया, वो कभी स्कूल नहीं जाएंगे। उन माओं का हाल देखें जो माएँ सुबह अपने बच्चों को उठाती थी, उनसे कई घंटों पहले उठती हैं ताकि उनकी लाड़ियाँ उठाएं। वो फरमाइशें करके निकलते थे अपने घर स्कूलों के लिए और फिर वापस भी कि माँ हम आएंगे तो मामा हमारे लिए खाना बनाने। कल बड़ी सारी माओं जिनसे मेरी मुलाकात हुई, मैं वो बदकिस्मत रिपोर्टर हूँ जिन्होंने 100 से ज़्यादा, कल एक तो 6 डेड बॉडीज़ देखी हैं बच्चों की। रात गए तक मैं उन बच्चों को जो सुबह यूनिफॉर्म में माओ ने बहुत प्यार से तैयार करके भेजे थे, आज मैं आपको शायद मैं अपने जज्बात पर काबू ना पा सकूंगी, खुद मैं एक माँ हूँ, लेकिन मुझे पता है इन बच्चों का कसूर क्या है। जिन बच्चों को माओ ने तैयार करके भेजा, सारे बच्चे यूनिफॉर्म में थे, इतने खूबसूरत बच्चे, बोल नहीं रहे थे, उन्हें खाना नहीं चाहिए। अपनी फरमाइश का जो खाना उन्होंने कहा था कि हम आके खाएंगे, यहाँ की उन्होंने लाड़ियाँ उठवानी थी माओ से, अब नहीं है। उन बच्चों की माओ का पूछे, उन बच्चों की माओ से जब मेरी बात हो रही थी, वो किस गम से दो चार हैं, उनके पास कुछ नहीं रहा। मैंने एक ऐसी माँ भी देखी जिसने जो आई और मैं आखिर वक्त तक तसल्ली देती रही, नहीं नहीं आपके बच्चे मिलेंगे, लेकिन वो इतनी बदकिस्मत माँ थी कि तीनों बच्चे से मिले, लेकिन वैसे नहीं मिले। उसको तीनों की मैयतें CMH के अस्पताल के लॉन में रखते कई घंटे वहाँ गुजारने पड़े। एम्बुलेंसेस की शॉर्टेज थी पेशावर में, बहुत सारे बच्चे, खून नहीं था, खून के एहतियात ना मिलने पर बहुत सारे बच्चे हमसे चले गए। पेशावर की हर दूसरी गली में मैयत पड़ी है, मासूम। आज वही टाइम है बच्चों के स्कूल जाने का, यही सड़कें, यही गलियां, जब स्कूल की गाड़ियां आती थी हॉर्न बजाती हुई के आवाज़ें लगती थी कि देर हो रही है। आज किसी को देर नहीं हो रही। आज अगर थोड़ी देर होगी भी तो शायद उनकी तदफीन में एक दूसरे को ये कहा जाए कि जल्दी करो, इनकी तदफीन कर दो, वक्त पे इनको कब्रिस्तानों में पहुंचा दो। राबिया बस बहुत हो चुका। बहुत सारी माएँ आज बेहाल हैं, बहुत सारी माएँ बेहोश हैं। उनका क्या कसूर है, उनके बच्चों का, मासूम बच्चों का क्या कसूर था। बस नादिया, बहुत शुक्रिया आपका, और आपके गम में, पूरे पेशावर के गम में हम बराबर के शरीक हैं। मेरी आंखों में आंसू हैं, इस कौम की हर बेटी की आंख में आंसू हैं। आज वाकई हम सब के लिए बहुत बुरा दिन है। हम भी अपने जज्बात पर काबू रखेंगे क्योंकि हमने हौसले के साथ आगे बढ़ना है, हमने रिपोर्टिंग करनी है, सारा दिन रिपोर्टिंग करनी है, और हम कोशिश करेंगे कि हम उनके गम में बराबर की शरीक हों, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम ऐसी रिपोर्टिंग करें कि हम उनको हौसला दें मज़ीद, हम उन्हें मज़ीद इस बात का एहसास दिलाएं कि पूरी कौम उनके साथ है और वो अकेले नहीं हैं। Well, the world there is united in grief, not just the tears of those reporters, but across the world, at the loss of more than 100 innocent lives. The Pakistan Taliban appears unrepentant. It issued another statement today. They sought to justify the ghastly attack. The statement says they were forced to take this step since their own homes have been attacked, and vowed to continue the offensive against the Pakistani army. They deny having targeted the children, though, from the primary school. जो कबाइल के बच्चे हैं, ये मेरे बच्चे हैं। कबाइल की औरत सही है, वो हमारी माएँ हैं, हमारी बहनें हैं। 600 अफराद सिर्फ एक साल के अंदर बेगुनाह लोगों को, जो लापता लोगों को कत्ल करके फेंका गया है, उनकी लाशों को नफक करके इन्हीं को जो फेंका है। बहुत मजबूर होकर ये फैसला किया है कि उनको इनके घर के अंदर जख्म दिया जाए। जो अपने घर के अंदर जख्म आता है ना साईं, उसका एहसास फिर बड़ा होता है ना, कि इन्होंने हमारे घरों के अंदर आग लगाई तो हम इनके घरों में आग लगाने पर मजबूर हुए। हमने साथियों को बहुत ताकीद की है कि अगर कोई नाबालिग बच्चा हो तो वो, और आइन शरीफ का बच्चा ही क्यों ना हो, उसको निकलने का रास्ता दिया जाए। कम उम्र में कोई उसमें नाबालिग नहीं है, सबकी सब बालिग है। आपको पता है कि उसमें एक प्राइमरी सेक्शन है, एक दूसरा सेक्शन है, हमने दूसरे सेक्शन को निशाना बना। Okay, now while India has taken a stand against state-sponsored terror, the death of the 132 children in Peshawar has brought not just India but the international community together to speak in one voice against the terrorists. A day after the attack,
young children in Indian homes, their parents, and even our parliament spoke in one voice, condemning the attack in Peshawar and in a sense expressing solidarity with the people of Pakistan. People should maintain peace and harmony in the world. ऐसा फिर से नहीं होना चाहिए. हमने आज स्कूल में 2 मिनट का मौन रख के उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी. छोटे-छोटे बच्चे थे, उन पर जो हमला किया था वो ऐसा होना नहीं चाहिए. All differences were put aside today. India stood with Pakistan to grieve the loss of its children. Shot in the head at point-blank range was the news from Pakistan as the smallest coffins, the heaviest as one hospital nurse put it, were laid to rest. In India, schools across the country paid a silent tribute to their compatriots across the border who had to pay with their lives for simply daring to go to school. बच्चे भगवान का रूप होते हैं, उन भगवान को भी उन्होंने मार दिया. कितना मुश्किल होता है उन पेरेंट्स के लिए ये जानना कि उनका बच्चा अब नहीं रहा है. सिर्फ मौन धारण नहीं करना चाहिए, बल्कि एक साथ मिलकर हाथ में हाथ डालकर एक साथ काम करना चाहिए. एक जगह ये स्कूल ऐसी है कि यहाँ पेरेंट्स सोचते हैं बच्चे सेफ हैं, अब वो जगह भी नहीं छोड़ी है लोगों ने. बच्चों को वहाँ पे भी मारते हैं. इमोशनल हो रही है. Security measures were stepped up across schools and other sensitive locations across the national capital and other metros. Mumbai police had been on high alert since the time there had been news of semi-terrorists escaping and harboring themselves in Mumbai. There are lodges and hotels that are being searched by Mumbai police, apart from the fact, as you can see here at CST, the Rapid Action Force police personnel are stationed with their vehicle in case of any kind of emergency. Apart from that, it's not just CST, vital installations and main roads of Mumbai are being guarded by Mumbai police. With the twin terror attacks in Sydney and Peshawar, questions are being raised as to how prepared is Kolkata as a metro city in the country to face any such eventuality as the one that happened in the past 2 days. We did a reality check in 2 of the vital installations in Kolkata, Eastern India's biggest railway stations, Howrah as well as Sealdah, which is used by lakhs of commuters each and every day. We found that the security apparatus was absolutely inadequate. The war on terror has to be fought jointly, and the first concrete step Pakistan perhaps took was with a vow to fight till the very end. But will Pakistan stay the course? India will wait and watch. Bureau Report, headlines today. That's right. While India will wait and watch to see if Pakistan actually takes on terrorism, not just emanating out of Afghanistan, but also terrorism directed towards India, the big question is, will this be a turning point? Will this be an expression of solidarity that today Indians feel towards Pakistanis who've lost their young ones? Let's go across the country to get a sense of how India today, in this rare moment, is uniting with their brethren across the border. Joining me now, Kamlesh Sutar, he's live from Mumbai. Smita Sharma, she's live from Noida. Pratibha Raman is live from Bangalore. Shisha Reddy is live from Chennai. And Manogya Loiwal is live from Kolkata. I'm going to first come to 2 cities, first to Mumbai and Delhi, both of whom have been in the crosshairs of terror. First to you, Kamlesh, 26/11, where more than 150 people died. Even before that, 1993 Mumbai blasts. Innocents were killed, this time children in a school. The young children around you, I want you to get a sense, how do they react to what they saw on their television screen? Do you know what happened in Peshawar yesterday? Yes, I do. The kids in Peshawar in an army school were ruthlessly massacred. 150 kids were killed and 25 teachers approximately were ruthlessly, brutally killed. What was your first reaction when you saw those images on your television screen? I really got angry and I really got scared, but I could not do anything. Just I could see the TV, the news,
I could do nothing. I was helpless, totally helpless. Anger? You felt angry after watching those visuals? Actually, it was like there was no faith left in humanity. It was very helpless. It was a feeling that you couldn't do anything. It was very bad. You all observed a 2-minute silence in school today. What was told to you, and did you guys also react to that in your school today? You spoke in the school about it? News was shared to us about what happened, and we were like, everyone was depressed, and yeah, we were really sad. So we all together, like, we all observed 2 minutes of silence, and we really, felt really bad. What is the message that you want to give out to the people of Pakistan today? What is that feel? What do you want to share with the people of Pakistan? People have seen that attack. We should not attack children. They should not be the target. What is your message? What is the message that you want to give out to people in Pakistan? I want to say that that now all the students who have died, I feel the students now will come. They should. I feel that I'm feeling very bad. I want to say that all the students who are there, they should. I feel that it's very sad, and the message I would say that I feel that next time this should never happen again. It should not happen again. That's what they feel. There's anger, Rajiv, as you see, even small children of these age, most of them of their age, they say there's anger, and even some of them say that they feel helpless. They could just watch the images on TV, but feel helpless that they could do nothing about it. That's right. Today it could be Mumbai. Tomorrow it is Peshawar. Terror has a new address every day. Let's go to Smita Sharma here in the national capital. Smita, Delhi's experienced terror attacks, senseless.